A very good morning to all of you. Good morning everyone. Please let me know is that my voice is clearly audible and screen is clearly visible or not. जल्दी से एक बार बता दो is that my voice is clearly audible and screen is clearly visible or not. एंड एक बार फिर से क्लैप कर लेना कि आप मॉर्निंग की 7 AM की क्लास में भी प्रेजेंट हो, डिस्पाइट कईयों को जॉब्स में जाना है, कईयों को कॉलेजेस जाना है, मतलब बाकी काम करने हैं. यस सर, ऑल क्लियर. थैंक यू ममता. तो लेट्स प्रोसीड विद आवर सेशन. आई होप आपने कल वाला सेशंस रिवाइज कर लिए होंगे. देखो, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. फर्स्ट पॉइंट, वी डोंट हैव टू कवर ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो जो सिलेबस में स्पेसिफाइड हैं वी आर गोइंग टू कवर ओनली देम. ठीक, अब स्टार्ट करते हैं. जैसे हमारा एसओपी है, फर्स्टली वी आर गोइंग टू चेक दैट which type of and in what depth we have to cover accounting standards by seeing that किस टाइप के क्वेश्चंस पास्ट ईयर में आए हुए हैं. देखो, इन 2020 फेज 1 उन्होंने पूछा हुआ है इंड AS 18 रिलेटिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन अप्लाइज टू. मतलब AS 18 जो इंड AS 18 है वो किस किस पे अप्लाई होता है. तो इजी बेसिक क्वेश्चन है, बिकॉज इफ यू कवर होल इंड AS 18 तो कहीं ना कहीं आपको ये आंसर आ ही जाएगा. राइट. सिमिलरली है कि इंटेंजिबल एसेट्स कौन से हैं इनमें से. तो दिस क्वेश्चन यू कैन आंसर इवन विदाउट स्टडिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. फिर आता है आपके पास यू हैव टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन. देखो, डेप्रिसिएशन के केस में क्या था, अर्लियर वी हैव अ सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर डेप्रिसिएशन, बट नाउ द पोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन इज एडेड इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. ठीक है, तो वो वहां पे कवर हो जाएगा. अभी हम आंसर नहीं देंगे, पहले पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर कर लें, फिर उसके बाद देखेंगे कौन से आंसर्स हम आंसर कर पा रहे हैं, क्वेश्चंस हम आंसर कर पा रहे हैं. देन वी हैव अ क्वेश्चन, यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11. एंड सिमिलरली वी हैव वन मोर क्वेश्चन दैट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2. तो न्यूमेरिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं. Now we are going to cover each and every accounting standard in detail. Then वापसी आएंगे इस डॉक्यूमेंट पे and we will check that can we answer these questions or not. चलो, let's proceed to accounting standards. चलो, आप क्या जानते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में? What you know about accounting standards? Please let me know. हाँ जी, what you understand by accounting standards? एवरीवन, कोई भी सोएगा नहीं क्लास में सुबह सुबह. हाँ जी, देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच everyone has to follow while making their books of accounts. Means it's compulsory, not optional. It's compulsory to follow rules and regulations which are mentioned in accounting standard. We can say you have to follow all the rules, regulations, policies जो accounting standard में लिखी हुई हैं while maintaining your books of account. So accounting standards are basically set of principles, standards and procedures for what? To record the transactions, to recognize the transaction, to measure the transaction and how to disclose the transaction and what to disclose the transaction. Sorry. ठीक है, measure मतलब if I have to find the value of particular asset, then how I'm going to calculate that? How I will calculate that how much assets I have, how much the value of inventory I have, how much depreciation I'm going to charge. वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताने वाला है. राइट, सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, ये सारी बेसिकली जो रूल्स हैं, हर जगह हमारे पास बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं कि भाई इफ यू आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री यू हैव इंड AS 2, तो आप इसको फॉलो करो. उसके अंदर जो रूल्स लिखे हुए हैं यू हैव टू फॉलो दैट. ठीक है, सो दीज आर बेसिकली जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल मींस
these are applicable to everyone and everyone has to follow them. अब what is the reason कि हमें एक separate rules and regulations की need पड़ी है? We have already covered sir कि how we have to create our books of account, right? अब उसके अंदर भी हमने ये तो देख लिया, let's say you have to apply depreciation. Let's say you have to apply depreciation. तो अगर depreciation लगाना है तो किस basis पे लगाना है? We have seen that you have to record the value of inventory. If you buy inventory, you are going to record it. Like ठीक है, sales, purchases account debit to bank account. We have seen this journal entry, that how to pass a journal entry. But the question is, let's say at the end of the day, अगर balance sheet में we have to show our closing stock, then at what value we are going to show our closing stock. राइट तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर अवेलेबल हैं, राइट ताकि पर्पस क्या है, ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इफ यू रिमेंबर गवर्नमेंट, इफ यू रिमेंबर इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, लेंडर्स, एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट, सबको इजीली अंडरस्टैंड हो सके अकाउंट्स हमारी, राइट समझ आ गया. सो इट्स हेल्प्स इन डिपिक्टिंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ आवर ऑपरेशंस, और ये हार्मोनाइज करेगा कि ठीक है सारी कंपनीज इन इंडिया आर फॉलोइंग सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो कहीं ना कहीं इट विल बी इजियर फॉर इन्वेस्टर, इजियर फॉर गवर्नमेंट टू कंपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस? एडवांटेजेस क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के? दे आर गाइड एंड असिस्ट ऑडिटर्स. हु आर ऑडिटर्स? देखो आई नो यू आर सो मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, तो ऑडिटर्स कौन है? बेसिकली जो बुक्स को चेक करते हैं, ऐसा मान लो जो बुक्स को चेक करते हैं, दैट कि जो हमने बुक्स प्रिपेयर किए हैं, डू वी हैव प्रिपेयर्ड बुक्स इन अ राइट मैनर और नॉट, डिड कहीं ना कहीं हमने गलती तो नहीं करी, राइट, दैट आर ऑडिटर्स बेसिकली. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प्स एंड गाइड एंड असिस्ट ऑडिटर्स, ठीक है, दैट यू हैव टू चेक दैट दे हैव फॉलो, मतलब ऑडिटर हैव टू चेक दैट द कंपनी हैज फॉलोड रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन्ड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और नॉट. तो ये चीजें उनको चेक करनी है. सिमिलरली इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी एंड कंपेरेबिलिटी. यूनिफॉर्मिटी मींस एवरीवन इज फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सो प्रोसीजर्स, मेथड्स समवेयर आर सिमिलर टू ईच अदर फॉर ईच एंड एवरी कंपनी, राइट. इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज, ठीक है. द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फ्लेक्सिबल. व्हाट फ्लेक्सिबल हियर मींस, ऐसा नहीं हुआ है दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में उन्होंने लिख दिया दैट यू हैव टू फॉलो दिस, राइट, या ऐसा नहीं हुआ है यहां पे लिख दिया कि यू हैव टू अप्लाई डेप्रिसिएशन ऑफ 10%. दे हैव गिवन यू ऑप्शंस टू चूज, ठीक है, दे हैव गिवन एन ऑप्शन टू चूज. फॉर एग्जांपल दे हैव गिवन एन ऑप्शन दैट इफ यू कैन फॉलो FIFO मेथड और यू कैन फॉलो वेटेड एवरेज मेथड. सर व्हाट आर FIFO मेथड और व्हाट आर वेटेड एवरेज, वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे ओनली, right. So they have given options in many cases that you can follow any one of the method, right. In the, let's say, depreciation, they have given you an option that you can follow either straight line or written down value, right. So it's a flexible, plus it helps in avoiding frauds. How avoiding frauds? Everyone knows कि हमें ऐसे record करना है, so there is very less chance to manipulate the books of accounts, right. फिर अब limitations क्या हैं? देखो, difficulty between choosing the alternative. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने मेंशन कर दिया ईदर यू कैन फॉलो FIFO और ईदर यू कैन फॉलो वेटेड एवरेज, राइट, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड. बट हम कंफ्यूज हैं विच वन इज बेटर फॉर अस. तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी है, कहीं ना कहीं होता है ना, इफ वी हैव मोर ऑप्शंस, कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि विच वन टू ऑप्ट. देखो 12th तक लाइफ अच्छी क्यों होती थी? क्योंकि हमें पता होता था दैट आफ्टर 8 वी हैव टू गो 9, देन वी हैव टू 10, देन वी हैव टू गो इनटू 12th. 12th के बाद क्या होता है? वी हैव ऑप्शंस टू चूज. तो अभी कहते हैं लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट होती है 12th के बाद, राइट. आपने भी ये रियलाइज किया होगा. सेम इट हैज अ रिस्ट्रिक्टेड स्कोप. रिस्ट्रिक्टेड स्कोप का मतलब क्या है? बेसिकली दैट जो लॉज है किसी भी कंट्री के, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इन बिटवीन दिस लॉज. ऐसा नहीं हो सकता दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो चीज मेंशन है इट वायलेट्स लॉज ऑफ द कंट्री, राइट. फिर it brings inflexibility. What inflexibility means here? Though, see, they have mentioned that either you can follow FIFO method or weighted average. Let's say someone want to follow LIFO method, तो वो follow नहीं कर सकता.
somewhere you have to choose between the options given in the accounting rules and regulations. ठीक है, it is time consuming. If you have to make your accounts on the basis of accounting standards, it will take time to follow each rules and regulations and procedures. Right? ये बात समझ आ गई, easy सा basically. Now what are the advantages and disadvantages? Already covered. First, next is international financial reporting standards. See, in India we follow accounting standards. ग्लोबली जो स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं दैट आर नोन एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, IFRS. ठीक है, ग्लोबली कंपनी जो फॉलो करती हैं दैट आर IFRS, द स्टैंडर्ड दैट आर ग्लोबली एक्सेप्टेड. एंड हु हैज इशूड दैट स्टैंडर्ड्स? इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. सर, कंपनीज इन इंडिया फॉलो IFRS? नो, कंपनीज इन इंडिया डोंट फॉलो IFRS. हमारी जो ICI है उन्होंने 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, याद रखना. दे हैव गिवन अस 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. बेसिकली 2 हैं अलग अलग. एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक है IND-AS, दैट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ठीक है, सो कंपनीज इन इंडिया ईदर हैव टू फॉलो AS और IND-AS. दे कांट फॉलो IFRS. IFRS आर बेसिकली फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोब. ठीक सर, अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है. आपने बोला व्हाई वी आर नॉट फॉलोइंग IFRS. अब भी 2 मिनट में बताऊंगा, टेंशन मत लेना. ठीक है, सो इन इंडिया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है ICI का, दैट मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस. बेसिक कौन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ ICI. राइट, ही विल रेगुलरली अपडेट करेंगे उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को. ही विल चेक दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर helpful or not, or is there any limitation or problem in following that accounting standard. ठीक, now the main point. In India we have 2 accounting standards. First is accounting standard and second one is Indian accounting standard. See, initially क्या होता था? We have only one set of rules and regulations जिसे हम बोलते थे accounting standards. फिर धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन आया 1991 में. राइट, तो हुआ क्या? हमारी कंपनीज भी मल्टीनेशनल होने लगी. इंडियन कंपनीज आर आल्सो नाउ ग्लोबल. दे हैव देयर सब्सिडीज, दे हैव देयर ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड. राइट, ये हुआ. नाउ सी, इफ आई हैव अ ब्रांच, इफ अ कंपनी हैज अ ब्रांच अब्रॉड, सो दे हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. सो कहीं ना कहीं क्या होगा? वहां के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग हैं, यहाँ के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग हैं. सो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. Right, so अब हुआ क्या? Then ICI come up with a new accounting standards. These are the old existing. Then ICI come up with a new accounting standard that are known as Indian accounting standards. And these new accounting standards are made on the basis of IFRS. They are made on the basis of IFRS. Now question will arise कि सर हमने पूरा का पूरा IFRS क्यों नहीं अलाउ किया कंपनीज को? Why we have not allowed to follow IFRS? बेसिकली IFRS एक अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, AS एक अलग है इंडिया के ओल्ड. देन ICI मेड अ न्यू वन दैट इज IND-AS. ठीक है, पर्पस क्या था इसका? दैट कंपनीज आर ग्रोइंग मल्टीनेशनल, सो देयर इज अ नीड कि हम कहीं ना कहीं वी फॉलो IFRS also. So जो IND-AS बने ना, that is basically converged version. Basically we have taken points from IFRS so that our books of accounts, the books of accounts of companies in India कहीं ना कहीं similar हो सके IFRS की. Question is why not completely IFRS? देखो, each country has some own practices, some own policies. तो कहीं ना कहीं ICI को ये लगा that हमें पूरा IFRS फॉलो नहीं करना, हमें पूरा का पूरा IFRS नहीं फॉलो करना. वी हैव डिफरेंट प्रैक्टिसेस, डिफरेंट पॉलिसीज इन इंडिया. सो दैट्स व्हाई दे फॉर्म्ड अ न्यू वर्जन दैट इज IND-AS. समवेयर कन्वर्ज का मतलब क्या होता है? अचीव हार्मनी एंड कोऑर्डिनेशन विद IFRS. दे हैव टेकन प्रिंसिपल्स, सम रूल्स एंड रेगुलेशन, नॉट कंप्लीट एडॉप्शन. ठीक है, नॉट कंप्लीट एडॉप्शन.
So that's why we have two accounting standards, accounting standard and Ind AS. Sir, we are going to cover both of them. ठीक है, Ind AS also and AS also. Firstly, I am going to cover Ind AS, the new one with you, क्योंकि बहुत रिसेंट है तो क्वेश्चंस इनसे आते हैं जैसे आपने देखा भी. एंड देन वी विल चेक दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AS एंड Ind AS. ठीक, ये पॉइंट क्लियर हुआ. अब Ind AS जो है दैट इज बेसिकली अ प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच. सर व्हाट इज प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच? देयर आर टू अप्रोचेस. देखो, रूल बेस्ड अप्रोच और प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच. लेट्स से मैं कल से आपको कहूं कि you have to wear a shirt and jeans in the class. This is basically I made a rule which everyone of you have to follow, right? And what is the principle based approach? So let's say I guided you that everyone you have to wear a decent clothes in the class. So somewhere I am guiding you, not applying any rules and regulations on you. ठीक है, समझ आ गया? ऐसा ही कहीं ना कहीं फर्क होगा Ind AS और AS में. In AS में क्या था, that there are rules and regulations which company has to follow. Here we have a principles कि ठीक है, we have to make our accounting on this particular basis, right? ये बात समझ आ गई. अब सर, company can follow Ind AS and AS any one of their choice? The answer is no. तो time to time there are set of rules and regulations जो आती रहती हैं गवर्नमेंट की, that if you are under this category then you have to follow Ind AS. If you are under this category, you have to follow AS. So we don't have to go कि किस कंपनी को कैसे कैसे rules and regulations आए हैं. ठीक है. अब Ind AS are on the basis of value, fair value. Ind AS is basis on the fair value, whereas AS follow historical cost. Sir, how I'm going to tell you when I'm going to study Ind AS in details. ठीक है, तो इसकी टेंशन मत लो. I hope this is basically point clear. This is the basic. We have two accounting standards, AS and Ind AS. Now we are going to start and pick Ind AS one by one and cover each of them. If you have any doubt till now, एक बार बता दो. This is basically what accounting standards are. अभी तक कोई भी डाउट? वैसे कुछ खास पढ़ा नहीं है हमने, but that in case अगर कुछ आ रहा हो माइंड में, let me know. Now I am going to start with the main concept of the class, that is Ind AS valuation of inventories. जल्दी से, clear, crystal clear, nothing doubt. जल्दी से everyone. हाँ जी, क्लियर. देखो, इतना कुछ डिटेल में था भी ना. अब नाउ वी आर गोइंग टू पिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक एक करके, एंड वी आर गोइंग टू कवर ईच ऑफ देम इन डेप्थ. सबसे पहले आएगा हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज. What is the purpose of this accounting standards? To determine the value of inventory in my books of account. If in my balance sheet I am writing closing stock in my assets, then what is going to be the value to be written here? What is going to be the amount to be written here? ठीक है, आप सभी कहोगे सर जिसमें परचेज किया है उस पे खरीद लो. राइट और रॉन्ग? लेट्स से I purchased shoes. I purchased 1,000 shoes of rupees 80 each, right? And let's say I sold 700 of them. Now I have a closing stock of 300. Now you all are going to say कि 300 बचे हैं सर, 80 का खरीदा है, 24,000 is the value of closing stock. अगर ये इतना इजी होता तो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने की नीड ही नहीं थी. इतना पोर्शन तो हम जर्नल में सीख के आए थे, जनरल लेक्चर में, राइट? हियर इज सो मच डेप्थ वी हैव टू कवर. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्वेश्चन अराइज होगा, सर what valuation of inventory we are studying, what is inventory means? Inventory means, देखो, inventory doesn't mean the only stock we have, the finished goods we have. Inventory includes three things. First of all, the finished goods we have which are held for sale purpose. Then we have work in progress, and then we have raw material.
all the three are included in inventory. Let's say I have a business of manufacturing shoes. ठीक है, तो मेरे पास लेदर पड़ी है. That leather and thread I have is my raw material. So that is also part of inventory. Let's say few shoes are in the process of manufacturing. तो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई इन्वेंट्री. एंड जो कंप्लीट हो गए हैं, रेडी टू सेल इन द मार्केट, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई इन्वेंट्री. ठीक है, लेट्स से आई हैव अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शर्ट्स. तो इन दैट केस द रॉ मटेरियल, क्लॉथ मटेरियल इज बेसिकली माई रॉ मटेरियल. फिर अनस्टिच्ड टी शर्ट, लेट्स से आई हैव cut these shirts, अभी स्टिच होनी बाकी है, that is basically work in progress, that is also a part of my inventory. And full t-shirts which are ready to be sold in the market is also my part of inventory, which is finished good. ठीक है, now what not to be included in finished goods. देखो in accounting standards होगा क्या, they will define. ठीक है, these accounting standards are going to be apply on these things, and these accounting standards are not going to apply on these particular things. So in DS में उन्होंने बताया कि we are going to include three things in inventory: raw material, work in progress and finished good. Now they have mentioned that किस कौन सी inventory we are not going to include. First of all, financial instruments. Financial instruments, we are not going to consider this as the inventory. Sir, financial instruments are investments. Why they are saying कि inventory है? Listen, let's say I am a trading firm, or let's say I am a stock broker. तो कहीं ना कहीं मेरे पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं which I have kept with myself to sell in the market. तो अगर मेरा फाइनेंशियल बिजनेस है तो कहीं ना कहीं मेरे पास वो उसकी इन्वेंट्री हो सकती है. Sir, why they have excluded financial instruments? Because they are saying that we have different accounting standards. We have different accounting standards for financial instruments. So the rules and regulations mentioned in Ind AS 2 will not apply in the financial instruments. In the same manner, biological assets कौन से हो गए? Live animals और plants हो गए. Let's say आपके पास वो है, बतखें हैं, आपके पास मुर्गियां हैं, तो प्लांट्स है बेचने के लिए, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इन्वेंटरी. तो अगर आपका वो है, क्या कहते हैं उसे, जहां से हम प्लांट्स खरीदते हैं, नर्सरी है, यू हैव अ प्लांट्स विद यू, सैंपल्स विद यू, तो दैट आप कहोगे दैट इज इन्वेंटरी फॉर यू बिकॉज दैट इज kept with you for selling purpose, right or wrong? But नहीं, वो कह रहा है कि you are not going to follow this accounting standards, you are going to follow Ind AS 41 agriculture. ठीक है, in the same manner उन्होंने दो चीजें और बोली हैं, that first of all producers of agriculture, forest and mineral products and commodity broker traders. ठीक है, तो इन सबको AS2 फॉलो नहीं करना, Ind AS2 फॉलो नहीं करना. You have to remember the things. Reason being, they can ask the question in the exam that out of these three, which of the one is not going to follow Ind AS2? ये एग्जाम में आएगा. ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेडर्स, they are not going to follow these rules and regulations. ठीक है, वो मैंने मेंशन किया. Now नेक्स्ट कंसेप्ट आता है यहां पे. अब नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक, हमने वी हैव कवर्ड व्हाट इज इन्वेंटरी एंड व्हाट इज नॉट इन्वेंटरी. मतलब किसको इन्वेंटरी कहेंगे और किसको इन्वेंटरी नहीं कहेंगे एज पर दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. नो, दे आर नॉट इंक्लूडेड. ठीक है, फर्स्ट नेक्स्ट कंसेप्ट आता है डिफरेंस बिटवीन NRV एंड फेयर वैल्यू. NRV एंड फेयर वैल्यू, और यहीं पे हम एक कंसेप्ट और करेंगे, वर्सेस कॉस्ट. तीन चीजें हो गई, NRV, fair value and cost. ठीक है, these are basically three different things for a same product. Let's say मैं टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग में हूं. Let's say I am in manufacturing of t-shirts. ठीक है, अब मेरे पास कुछ अनस्टिच्ड टी शर्ट्स पड़ी हैं. मेरे पास कुछ अनस्टिच्ड टी शर्ट, I have some unstitched t-shirts, right? Now what is going to be the value of this t-shirt? So it will depend on three cases. If I am saying the cost, so I am going to include so many things, that the material, labor required to make this particular t-shirt, unstitched one.
right? Then we have fair value. What fair value means? कि if I sell this unstitched t-shirt in the market, then how much value, how much amount I am going to realize? That is basically a fair value. ठीक है? Then we have net realizable value. Net realizable value क्या कहती है कि हरनीत इस टी शर्ट को पूरा करो, इस टी शर्ट को पूरा करो और उसमें से जो काम बचा हुआ है ना उसकी कॉस्ट माइनस कर दो. सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स. लेट्स टेक एन एग्जांपल. फर्स्ट वैल्यू क्या हो गई? मैंने देखा आई हैव टेकन अ रॉ मटेरियल ऑफ 20 रुपीज. आई हैव टेकन अ थ्रेड ऑफ जस्ट अनस्टिच्ड है तो छोड़ दो, थ्रेड तो इंक्लूड होगा नहीं. लेट्स से लेबर ऑफ 50 रुपीज और लेट्स से कुछ भी और मटेरियल लगा 30 रुपीज. तो टोटल the cost till now I have incurred on manufacturing this unstitched t-shirt is 100 rupees. ठीक है? If I sell, let's say hypothetically assume, if I sell this unstitched t-shirt in the market, there is one trader who is ready to give me, let's say 90 rupees. This is basically a fair value. This is my actual cost. This is how much I realized by selling the product in the market. Right? फिर आता है हमारे पास net realizable value. What net realizable value means? Net realizable values means क्या होता है? अगर मैं इस टी शर्ट को कंप्लीट कर लूंगा, तो लेट से मैं इसको 200 रुपीज में मार्केट में बेचूंगा. ठीक है? एंड टू कंप्लीट दिस टी शर्ट, टू कंप्लीटली मैन्युफैक्चर दिस टी शर्ट, मुझे स्टिचिंग करनी होगी. लेट से उसकी कॉस्ट आएगी 50 रुपीज. एंड सेलिंग दिस टी शर्ट टू अ मार्केट, वो आएगी मेरे को 30 रुपीज. तो ये आ गया मेरा एनआरवी. तो एक होती है हमारे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एक होती है हमारे पास फेयर वैल्यू, एंड वन वी हैव कॉस्ट. Cost is basically I am adding all the expenses I have incurred till now, till this point of process. समझ आ गया? तो कॉस्ट मेरी 100 रुपीज आ गई. देन वी हैव फेयर वैल्यू. फेयर वैल्यू मींस द प्रोडक्ट जो अभी तक रेडी है, इफ आई सेल इन द मार्केट, हाउ मच अमाउंट आई कैन रियलाइज, कितना मैं बेच के कमा सकता हूं. देन वी हैव नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जिसमें क्या होता है बेसिकली वी आर डिडक्टिंग. अगर मैं मान लो इस टी शर्ट को कंप्लीट कर दूं, देन हाउ मच अमाउंट आई गेट माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स. ठीक है? ये बात समझ आ गई? नहीं भैया तो भी बहुत डिटेल में जाने का है, टेंशन नहीं लेनी. सर व्हाई वी आर स्टडीइंग नेट रियलाइजेबल वैल्यू, फेयर वैल्यू एंड कॉस्ट? लिसन केयरफुली. Sir, here fair value is cost of sales. Yes, cost of sales means this unstitched, जो अभी आधी पड़ी हुई टी शर्ट है, मतलब जिसको अभी मैंने सिलाई नहीं करी है, how much amount I can realize by selling this in the market. ठीक है? समझ आ गया? That is basically fair value. And here the selling price is of complete t-shirt, not half stitched. ये बात समझ आ गई? Sir, why we are studying all this? देखो द पर्पस ऑफ स्टडिंग ईच ऑफ दिस इज दैट हमें बोलता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट यू हैव टू मेजर द इन्वेंट्री एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी. मतलब फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री, then you have to calculate the NRV of the inventory, then you have to compare both of them. और जो lower होगा, you have to record the inventory at that amount. Let's say my NRV comes out to be 92 rupees. My cost come out to be rupees, let's say 80 rupees. Then I am going to record my inventory closing stock at 80 rupees. और कॉस्ट यहां लिखनी थी, कॉस्ट हो गया 80 रुपीज, एनआरवी लेट्स से 92.
So I'm going to record my closing stock at 80 rupees. So the main crux here is, as per accounting standard number 2 in AS2, we have to record our inventory at the lower of cost or NRV. ठीक है, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं 200 NRV बेसिकली और फेयर वैल्यू और कॉस्ट में फर्क क्या है. लेट्स से मेरी एक टी शर्ट है, कंप्लीट टी शर्ट ले लेता हूं इस बार, थोड़ी अजीब बनी है, कोई नहीं. ये अगर कंप्लीट हो जाए, ठीक है, आई एम गोइंग टू सेल दिस कंप्लीट टी शर्ट इन द मार्केट एट रुपीज 200. 100 ले लेते हैं, नीचे मैंने एग्जांपल में 100 ली हुई है, लेट्स से 100. ठीक है, कंप्लीट टी शर्ट अब भी इनकम्प्लीट है. इफ आई कंप्लीट दिस टी शर्ट देन आई कैन सेल दिस टी शर्ट एट रुपीज 100. राइट, अब कंप्लीशन की कॉस्ट आएगी 5 रुपीज एंड सेलिंग कॉस्ट इज 3 रुपीज. सो अभी जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी 92 रुपीज. दिस 92 इज NRV. कंप्लीट कॉस्ट की सेलिंग, कंप्लीट टी शर्ट की सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस कॉस्ट ऑफ सेल. फेयर वैल्यू क्या हो गया, लेट्स से इनकम्प्लीट टी शर्ट विच इज अनस्टिच्ड, इफ आई सेल इन द मार्केट टू समवन एल्स, तो वो मुझे लेट्स से 90 रुपीज देने के लिए तैयार है. दिस इज नोन एज फेयर वैल्यू. कॉस्ट क्या हो गया, कॉस्ट इज बेसिकली हाउ मच कॉस्ट आई इनकर्ड till now to manufacture this unstitched t-shirt. Let's say I purchased a cloth, a raw material of 50 rupees. I have given my labor wages of let's say 40 rupees. Let's say I have other cost of 2 rupees. Then this comes out to be 92 नहीं 92 छोड़ो, अलग करते हैं, indirect cost 3, 93 is my cost. NRV सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स. बल्कि उल्टा चल के आ रहे हैं, यहां पे उल्टा चल के आ रहे हैं. ठीक है, फिनिश गुड का सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐसा होगा, सॉरी, माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन. इधर हम कॉस्ट में डायरेक्ट सीधा चल के आ रहे हैं. फर्स्टली वी हैव इनकर्ड एक्सपेंस ऑन रॉ मटेरियल, देन लेबर, देन अदर मटेरियल. ठीक है, फेयर वैल्यू इज सिंपल. इफ आई सेल दिस टू इन द मार्केट, हाउ मच वी आर गेटिंग. ये बात समझ आ गई. एंड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 वी हैव टू चेक द NRV एंड द कॉस्ट. जो भी लोअर होगा, जैसे 93 और 92, सो आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट 92 रुपीज, दैट माई क्लोजिंग स्टॉक इज ऑफ 92 रुपीज. ठीक, लेट मी टेक फ्यू ऑफ योर डाउट्स. अभी तक कोई भी छोटे मोटे डाउट्स हैं, यू कैन आस्क नाउ, देन आई गो हेड. और मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो. व्हेन आई एम सेइंग दैट यू हैव टू रिकॉर्ड द क्लोजिंग स्टॉक, यू हैव टू रिकॉर्ड द क्लोजिंग स्टॉक एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV. So which accounting principle I am violating here? Which accounting principle I am violating here and which accounting principles we are following here? Accounting principles याद करो, हमने पढ़े थे going concern, consistency, accounting period concept, concepts and conventions पढ़ी थी ना. Which you are violating here, which you are following here? Let me check कितनों का थोड़ा बहुत learn है पिछली क्लासेस से, और तब तक के मैं आपके डाउट्स देता हूँ. In NRV formula, selling price minus cost of completion minus cost of sale or fair value. No, cost sale is fair value in this formula. No, fair value is अभी जो मेरे पास माल पड़ा है, how much I can realize from it. ठीक है, let's say I have this remote. ठीक है, इस रिमोट में अभी ढक्कन नहीं बना हुआ. अरे कुछ गलती दब तो नहीं किया, छोड़ो. Let's say I have this remote. Let's say I have not attached a cap to it. This is
समवेयर इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग राइट नाउ। ठीक है, फेयर वैल्यू क्या होगी? इफ आई सेल दिस रिमोट विदाउट द कैप, विदाउट कंप्लीटिंग द प्रोसेस, देन हाउ मच अमाउंट आई कैन रियलाइज फ्रॉम द मार्केट। मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ प्रोसेस, अभी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट नहीं हुआ, हाउ मच अमाउंट आई कैन रियलाइज। ठीक है, तो वो हो गया मेरा फेयर वैल्यू। कॉस्ट क्या होगी? आई विल कैलकुलेट, ठीक है, कितने का प्लास्टिक लगा, कितने का रबड़ लगा, कितने की लेबर लगी, राइट। एंड एनआरवी क्या होगा? लेट्स से आई कंप्लीट दिस एंड सेल इन द मार्केट, दैट इज बेसिकली सेलिंग प्राइस, माइनस कितने कंप्लीशन की कॉस्ट आई, माइनस कितना सेलिंग की कॉस्ट आई। ठीक है, आई होप नमिता दैट पॉइंट इज क्लियर। So this fair value is different from the selling price. Selling price is of complete product and fair value जो अभी इनकम्प्लीट भी पड़ा है उसकी वैल्यू क्या है मार्केट में। हाँ जी, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल वी आर फॉलोइंग हियर एंड विच आर वी आर वायलेटिंग हियर। सो cost, sale, you are using two different terms, cost and sale. Cost is different and selling price is different. What is cost, sale? Nothing like that. Cost is different, selling price is different. अभी और डिटेल में जाएंगे, डोंट टेक टेंशन देयर। देखो यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई बच्चों। इफ वी आर फॉलोइंग लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, हियर वी आर वायलेटिंग आवर हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट वी आर वायलेटिंग दिस वन। सर हाउ? देखो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट सेज दैट यू हैव टू रिकॉर्ड द वैल्यू एट द कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट, you can't reduce the value or can't increase the value. Here we are reducing the value if NRV is lower. So somewhere we are not following this concept, historical cost concept, which says जितने में खरीदा है ना उतने में लिख दो, so cost में रिकॉर्ड करो। और we are following sir which concept? Conservatism. Sir how conservatism? कंजर्वेटिज्म कैसे? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या है? एंटीसिपेट द लॉसेस। एंटीसिपेट द लॉसेस। आई एम चेकिंग माय कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड इज लेट्स से 490, माय एनआरवी इज लेट्स से 450। तो मुझे अभी से पता है, आई नो फ्रॉम टुडे दैट आई एम गोइंग टू गेट लेसर अमाउंट इन फ्यूचर, सो राइट नाउ रिकॉर्डेड एनआरवी। ठीक, कॉस्ट सेल्स नहीं है, कॉस्ट है सिर्फ। थर्ड वाले में कॉस्ट सेल्स का है, कॉस्ट। सो आवर इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी. If cost is lower, I'm going to record at this. If NRV is lower, I'm going to record at this. Here we are following principle of conservatism and violating historical cost concept. Right? ये अच्छा, this cost, अरे यार, this cost is basically selling cost. Here cost of selling I am want to say, cost sales is selling cost. Let's say commission paid to a seller, let's say advertisement cost, right? This is basically selling cost, not cost sales. I want to explain that sales of cost, मतलब cost related to sales. Let's say I paid commission to my seller. Let's say I
have incurred advertisement expenses that are basically cost of sales. Yes, absolutely राशि if NRV पे होगी तो वो लॉस है हमारा. Yes, selling expenses. चलो. Now our next task in this particular accounting standards, we are going to check what is going to be cost and what is going to be NRV. अभी तो basic किया है. We are going to go in so much depth. So our next task is which amount to be included in cost and how to calculate NRV. मतलब how to calculate cost and how to calculate NRV. तो cost सबसे पहले in cost of inventory we are going to add three things: cost of purchase, cost of conversion and other cost. Cost of purchase, cost of conversion and other cost. ठीक है. Cost of purchase का मतलब क्या हो गया है? Let's say I am in manufacturing of shirts, so the raw material I purchase, तो जो cloth मैंने खरीदा, ठीक है, the thread I purchased, the buttons I purchased is basically cost of purchase. What is the cost of conversion? Cost of conversion I paid to labor to manufacture the shirt, right? That is basically my cost of conversion. Any other cost में क्या आ जाएगा? Let's say I paid a designer to customize that t-shirt या shirt, that is basically other cost. Indirectly बोलूं, the all cost which I incurred, all the cost which I incurred in manufacturing of that particular shirt is going to be included in cost of inventory. ठीक है. तो अगर मैं cost of purchases की बात कर रहा हूं, then the purchase price of raw material, right? Purchase price of raw material. If I have paid any taxes and duties, export duty मैंने पे करी है. If let's say I have imported, if let's say I have imported some goods, then I paid import duty on it. That is also part of my cost. So we are going to add this. But here you have to make sure one thing, only other than refundable. Refundable का मतलब क्या होता है? देखो, there are so many taxes. अच्छा मुझे एक बात बताओ. Let's say I purchased a raw material of 100 rupees and given a GST of let's say 20 rupees. ठीक है. Now I am selling goods let's say at 150 and receiving GST of 30 rupees. So actually tax paid to government is 10 rupees only. If you remember GST का जो concept है, right? So here I am not going to take this 20 as a cost. I am going to take 10 rupees only a cost. Yeah, in some cases government said कि let's say if you buy these things we are going to refund you the taxes. तो अगर government refund कर रही है, if government is refunding you taxes, then you are not going to add them in your cost. So make sure only other than refundable taxes जो actually आपकी जेब से गया, right? Then freight inward, basically transportation cost. I'm going to add all the three and deduct my trade discount. If I received any discount, I'm going to remove that. ठीक, ये बात समझ आ गई. This is basically my cost of purchase. I hope everything is clear till now. हाँ जी, जल्दी से बता दो एक बार. देन आई गो हेड टू बी द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन. तो कॉस्ट ऑफ परचेज में परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटी, कोई भी अदर टैक्स है या कोई भी अदर कॉस्ट दैट इज रिलेटेड टू माय परचेजिंग वो ऐड होंगी एंड आई एम गोइंग टू रिड्यूस ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट नमिता. डिडक्ट सब्सिडीज. चलो, नाउ बिफोर मूविंग अहेड टू कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, एक बार एक कंसेप्ट समझ लेते हैं कॉस्टिंग का. लिसन केयरफुली. देखो, इन कॉस्टिंग वी क्लासिफाई ऑल आवर कॉस्ट. इन कॉस्टिंग वी क्लासिफाई ऑल आवर कॉस्ट इनटू टू कैटेगरीज: डायरेक्ट कॉस्ट एंड
indirect cost. Direct cost, indirect cost. Direct costs are the costs which are directly traceable to the product. Traceable to the product. For let's say I manufactured shirt, then I can trace कि ठीक है भाई इसमें 1 मीटर क्लोथ लगा है. I can trace इसमें let's say 5 buttons लगे हैं. Right? Think if you are manufacturing car, then you can trace the cost. ठीक है इसमें 4 seats लगी हैं. You can trace the cost. देखिए ठीक है इसमें 4 टायर्स लगे हैं. इसमें एक वो लगा है क्या कहते हैं विंड वो लगा है वो लगी स्क्रीन लगी है लेट्स से. So all the costs which are traceable to the product are basically direct cost. And the costs which are not traceable are called indirect cost. I am manufacturing t-shirts. I have appointed one accountant to maintain my books of account. Now, मैं classify कर सकता हूँ. Let's say I paid a salary of 20,000 rupees to that accountant. Let's say I paid 20,000 rupees to that accountant. तो मैं क्या क्लासिफाई कर सकता हूं that in manufacturing this particular shirt 20,000 का कितना पोर्शन लगा है. In month I might be manufacturing thousands of t-shirts. Yes, shirts. So indirect costs are basically those costs which are not traceable to a product. Right? ये point समझ आया? What is the difference between the direct cost and indirect cost? समझ आया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या है. नाउ डायरेक्ट कॉस्ट कैन बी ऑफ मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस. मटेरियल आई कैन सी दैट आई हैव 1 मीटर 5 buttons. दिस इज बेसिकली डायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट लेबर से लेट्स से आई हैव अपॉइंटेड 1 लेबर ओनली टू मैन्युफैक्चर 1 शर्ट. then how much I am paying 1 labor for manufacturing 1 shirt is basically direct cost, direct labor cost. Any other direct expense you can think of. Indirect में भी we have material, we have labor and expenses. Indirect material हो गया, let's say I applied oil in my machine. अब वो oil 5 महीने तक चलेगा. I applied grease to my machinery. That is basically material, indirect material. I can't check ना कि मैंने मशीन में ग्रीस लगाया है. Then how much cost is incurred to one particular shirt? Right? Similarly, indirect labor, accountant की salary हो गई. I can't specify that how much salary is being used in this particular one shirt. And similarly, any other indirect expenses. Right? ये बात समझ आ गई कॉस्ट में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. अब नाउ इनडायरेक्ट कॉस्ट को वी आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. मतलब वी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज दैट आर related to production, that are related to administration, that are related to selling. Let's say I applied grease on machinery. I paid rent of plant. I paid rent of a building जहां पे हमारी production हो रहा है. That are basically related to a production. ठीक है? तो these are the indirect costs which are related to production. देखो आई एम पेइंग रेंट ऑफ माई बिल्डिंग जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है. आई कांट ट्रेस कि पर रेंट कितना जा रहा है एक शर्ट पे. राइट? सो सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेशन, वी हैव लेट्स से अकाउंटेंट विद अस, वी हैव ऑफिसेज विद अस, so that are related to administration expenses. Similarly selling, हमने कोई एडवर्टाइजमेंट करी है. आई कांट पॉइंट आउट ना कि कितनी एडवर्टाइजमेंट इस शर्ट को सेल करने में लगी, एक शर्ट को. That are related to selling. ठीक. इनडायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा? इनडायरेक्ट का एक और नाम होता है बेसिकली ओवरहेड. ठीक है ना? तो वी कैन से प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड. Yes, absolutely. Supervisors, indirect labor, electricity bill of office, absolutely correct. I hope that point is clear. What is the difference between direct and indirect cost? And indirect we classify into production, administration and selling. ठीक है? What is the point of teaching you this here? देखो, we are going to discuss all of them in costing in more detail. But what is the purpose? कि जब हम यहाँ पे पढ़े ना that in conversion cost
I have to add only direct material, direct labor, other direct cost. And in overhead I have to calculate on taken production overhead. मतलब ये सारी and this one. I'm not going to add my administrative and selling expenses. So I'm going, when I'm calculating the value of inventory I have, when I'm calculating the cost of inventory I have, I am going to add all these three and this production. The indirect cost which is related to production, like oiling, greasing of machinery. ठीक, I hope that point is clear now. So this is basically cost of conversion. So in conversion cost we are going to add cost directly related to units of production. Then जो overheads होंगे, so ये जो overheads होंगे, we are going to divide them. ठीक है, we are going to divide them. Let's say if we have fixed overhead or variable overhead, what is the difference between fixed production overhead and variable production overhead? Fixed production overhead are those which doesn't depend upon the output, the number of units I produce. For example, rent of a plant. If either I manufacture one shirt, either I manufacture thousands of shirts, rent is going to be same. Let's say I'm taking a private coaching institute, taking classes. Then I have taken a space on a rent. Then it doesn't depend if I'm teaching one student or if I'm teaching 1,000 students. The rent is going to be same for that particular area. So rent is basically fixed production overhead. And we have to divide on the basis of volume of production. कि उस area में कितनी production हुई है, उसके according we are going to divide the amount of fixed overhead. ठीक, then we have variable overhead. Variable production overhead we are going to divide on the basis of again volume of production. Basically this vary, we are going to use that कितना use हुआ है that particular production में. ठीक, ये बात समझ आ गई? मतलब जितना यूज हुआ है ना, जितना रेंट यूज हुआ है टू मैन्युफैक्चर दैट शर्ट, जितना वेरिएबल ओवरहेड यूज हुआ है, आई एम गोइंग टू इंक्लूड दैट अमाउंट. ठीक है, आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर. दिस इज बेसिकली कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन. वी हैव कवर्ड कॉस्ट ऑफ परचेजेस, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन. अब इधर एक पॉइंट और एक्स्ट्रा डिस्कस करते हैं. सी देखो, आई एम जस्ट सेटिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस कि व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट विच थिंग्स यू हैव टू ऐड. तो मैंने बताया इन द कॉस्ट ऑफ परचेज यू हैव टू ऐड दिस, you have to remove this. In cost of conversion you have to add all this, right? You can't add a selling cost, you can't add administrative cost. ठीक है, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टेलिंग मी कि ठीक है सर, while calculating cost ना, you have to make sure, you have to remember that you don't include administrative and selling cost, you don't include trade discount. ऐसा ना हो 100 ले लियो डिस्काउंट से पहले वाली अमाउंट ले लियो. I hope that point is clear. Any doubt till now? Let me take few doubts. Please explain the line given below the NRV and FV. Line given below the NRV. This line, if you are talking about NRV for inventory may not be equal to fair value, less cost to sell. जो NRV है जरूरी नहीं है इसके बराबर आए, बस यू हैव टू रिमेंबर दिस. एनआरवी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल. वो कुछ और भी हो सकती है. मतलब इफ यू कैलकुलेट एनआरवी इट डजंट मीन दैट वो फेस वैल्यू के इक्वल आए. रेंट डेप्रिसिएशन, व्हाई इट इज रिटन फ्री क्लासेस? बिकॉज टुडेज क्लास इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑल्सो. दैट्स वाई. बाकी जो रेगुलर क्लासेस होती है, डेली क्लासेस होती हैं, दैट आर अवेलेबल फॉर एनरोल्ड स्टूडेंट्स ओनली.
That's why free class is written, because today's class is available on YouTube also. And it doesn't mean कि सारी हैं, तो जो कल क्लास होगी that will be for enrolled students only. चलो आगे चलते हैं. अब एक पॉइंट आता है, let's say if there is a joint product. What is joint product? Joint product means we are doing manufacturing, and in one process we are getting two products, sorry. In one process I am getting two products. I think जैसा crude oil के साथ होता है, crude oil की manufacturing में we get petrol, diesel, kerosene, so we get so many products. Process एक ही और है, we are getting so many products, right or wrong? So that is basically joint product. Let's say I am selling petrol, तो question arise होगा, let's say I am selling petrol, ठीक है. I did a process. In this whole process 500 rupees cost in this whole process I incurred a cost of 500 rupees, and at end I get petrol and let's say diesel. Now the question is, how much amount I will think that there is a cost of manufacturing, या cost of producing petrol and cost of producing this diesel. Hypothetically assume manufacturing ले लो या producing ले लो. I did one process. In buying and conversion, the whole cost is incurred rupees 500. At end of the process, I have two products with me, petrol and diesel. Now I want to know what is the cost. What is cost I will allocate to petrol and how much cost I will allocate to diesel. क्या 250 लिख दूं? हाँ जी, क्या 250 लिख दूं? And then determine my profit on selling petrol and selling diesel. The answer is no. So there is a rules here. तो rules क्या है? Cost of conversion is separately identifiable. Means हरनीत सर, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है, हरनीत सर, if you can easily trace the cost of conversion, if you easily separate कर सकते हो, if you easily separate the cost, let's say out of this 500 I easily separate that, ठीक है, my cost of manufacturing या cost of producing petrol is 300 rupees and of diesel is of 200 rupees, then तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. Then you will are going to record petrol 300 cost, diesel 200. Now assume if you can't separately identify the cost. If you can't separately identify the cost, then what you are going to do? Then you have to allocate the cost on the basis of relative sales value. Relative sales value. Relative sale value means, let's say if I sell petrol in the market, I am getting, let's say, 100 rupees per liter. If I am selling diesel per liter, then I am getting, let's say, hypothetically assume 50 rupees. 50 rupees per liter, 100 rupees per liter. So I am going to divide the cost on the basis of 2:1. So I'm going to give 500 into 2/3. That comes out to be somewhere, calculate करो जल्दी से, तो ये हो जाएगा 1000 divided by 3, that will comes out to be जो भी cost आई. So I'm going to consider like 333 somewhere आएगी, 33 amount here and the remaining amount here. ठीक, if you identify separately easily कि 300 for petrol, 200 for diesel, well and good. If you can't identify, then you have to allocate the cost on the basis of sales value. ठीक है, on the basis of sales value. Absolutely correct. 3 point यहाँ आ जाएगी, remaining यहाँ आ जाएगी. अब सेल्स वैल्यू भी डिपेंड अपॉन कि कभी भी हो सकता है कि जब सेपरेट हो रहा हो प्रोडक्ट या फिनिश गुड हो. ये बात समझ आ गई. सेल्स वैल्यू इधर कैन बी, जब भी इन बिटवीन द प्रोसेस, इफ आई कैन सेल द डीजल और पेट्रोल, इफ इन बिटवीन द प्रोसेस आई कैन सेल डीजल एंड पेट्रोल, यू कैन टेक ऑफ दैट सेल्स वैल्यू और एट फाइनल ऑल्सो, इन बिटवीन द प्रोसेस और एट द एंड ऑफ द प्रोसेस.
दैट इज बेसिकली जॉइंट प्रोडक्ट। ऐसे ही एक प्रोडक्ट और होता है बाय प्रोडक्ट। वी हैव कवर्ड जॉइंट प्रोडक्ट, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट बाय प्रोडक्ट। व्हाट इज बाय प्रोडक्ट मींस? बाय प्रोडक्ट मींस माय प्लान इज टू मैन्युफैक्चर समथिंग एल्स, but I get something minute, not too much of high value, some minute product also. For example, when we manufacture sugar, so in manufacturing sugar we get sugar and we get molasses, right? So molasses can be sold in a market at a minimal cost, which you can feed to the animals, right? एक और एग्जांपल दो, when you convert milk into butter, so you get butter milk with that. तो अगर कभी घर पे देखा हो रेट रखते हुए, तो there is a butter milk and the butter. The cost of buttermilk is very high. The amount of cost of butter is very high. Then we have cost of that buttermilk is very low. Same, the cost, actually sorry, the amount, the selling value of sugar is very high. The molasses is very low. The main purpose is of sugar. The main product is sugar. ये buy है, buy मैं बोलूं somewhere extra product. In that joint case, the value of petrol and diesel both are somewhere important, equal. Both has its own good value in the market, good selling price in the market. But in the case of sugar and molasses, sugar is my important product, molasses is somewhere extra. Then how I am going to calculate the cost? See, now there are also two cases. If when my byproduct is immaterial means, let's say in same whole sugar process, conversion of sugar process, I spend 500 rupees. At end I get two things, sugar and molasses. If my byproduct is immaterial, let's say I get 5 rupees. I get 5 rupees by selling this molasses. Let's say I get 5 rupees by selling this molasses. So I am going to record that my cost of manufacturing sugar is 495. I'm going to record my cost of manufacturing this sugar is 495. So byproduct is measured at NRV and the value is deducted from the cost of main product. ठीक है? तो अगर हमारा जो मोलेसिस है उसकी वैल्यू को मैं यहां से रिड्यूस कर दूंगा, देन आई विल गेट माय कॉस्ट ऑफ शुगर. आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर. इफ अगर वो मटेरियल है, मटेरियल मीन्स लेट्स से दिस कुड बी सोल्ड एट let's say 50 100 rupees, then I will not going to treat this as my byproduct. Means if you are saying the value of molasses is somewhere equal to sugar or is very important, तो भाई ये byproduct हुआ ही कैसे? By means somewhere extra which is not important. ठीक है? तो if its value is high in the market, I am treat this as my joint product, नॉट बाय प्रोडक्ट. तो अगर उस बहुत मटेरियल है, माय बाय प्रोडक्ट इज ट्रीट एज जॉइंट प्रोडक्ट. फिर जॉइंट प्रोडक्ट होगा तो मैं फिर जो भी जॉइंट प्रोडक्ट होगा ना, जो भी जॉइंट प्रोडक्ट की गेम होगी, आई एम गोइंग टू चेक अकॉर्डिंग टू दैट. आई एम रिपीटिंग अगेन, ध्यान से सुनो. वी आर गेटिंग द कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट. तो जॉइंट प्रोडक्ट के केस में 2 केसेस बनते हैं. Joint product means in one process I'm getting 2 products. Now how to determine कितनी cost किसको देनी है? Let's say my total cost is 500 rupees. So 500 I have to divide the cost. So that how much I have to divide? So I have 2 options. Can I easily identify the cost? That okay, in petrol the cost is 300, in diesel the cost is 200. Then no problem. But if I can't identify, then determine on the basis of selling price. Selling price, the relative sales value. Relative sales value is basically if I sell these products
in the market, then how much I will get. If I sell the petrol in the market, if I sell the diesel in the market, how much I get. That is relative sales value. Sales value of this, sale value of this. On the ratio of them, I will divide my cost. In the same manner, if it is byproduct is one product is important, other is of less importance. In this case, I am going to remove 500 rupees में से जो इसकी selling price आई ना, इसकी NRV आई ना, इसकी NRV, I am going to reduce this NRV. Think like selling price. So 500 minus 5 rupees, I will decide my cost of sugar is 495. Sir, if the value of this byproduct is also important, if it is important, how this is byproduct? I will treat this as a joint product. I hope that point is clear now. Next is basically our other cost. Other cost में कौन सी आ जाएंगी? We have cost to bring in present location, transportation वगैरह से कुछ related हो गया, storage से related हो गया. Then if someone is customizing their product, let's say आपने मुझे कहा कि यार नमिता ने कहा कि सर प्लीज print this particular design in my t-shirt, then the amount paid to a designer is basically my other cost. ये बात समझ आ गई? So that is basically my other cost. Yes, absolutely. तो नमिता ने कहा let's say if we are manufacturing clothes, तो कभी कभार क्या होता है थोड़े कपड़े से निकल जाते हैं. Let's say if I sold that remaining somewhere to cushion maker or let's say anyone, then if that byproduct is of less importance, let's say 10 रुपए 20 रुपए मिल गए रद्दी के भाव, then I'm going to reduce the value. But if that particular product is of high value, then I'm treating it as a joint product. Absolutely correct. ठीक है. Now let's say I purchased good on a deferred settlement terms. एक next point आ रहा है, goods on a deferred settlement terms. What deferred settlement terms means? Let's say I purchase my raw material on EMI. So I decided that I'm going to pay 200 rupees for 4 months. ठीक है, 200 rupees for 4 months. Right. So my total cost कितनी जा रही है? 200 plus 200 ये हो गया somewhere 800. Now let's say if I purchase this on a cash rather than on my deferred settlement terms, rather than on EMI. Hypothetically assume I have to pay only 750. I am paying on EMI. That's why I have to pay 200 for 4 months. If I buy this on cash today, then I have to pay 750. So I'm not going to, listen carefully, I'm not going to record my cost of buying 800. I'm going to record my cost of raw material as 750. I'm going to record my cost as 750 rather than 800. Reason being, sir, I have to pay this extra 50 rupees because I am taking this deferred settlement terms. I'm paying in EMIs. So this is my finance cost. This is not related to my good. If I buy raw material today in cash, I have to pay only 750. I'm paying on EMI. That's why I have to pay 800. This is my finance cost, not related to product. So you have to remember this. ठीक. Now the points to keep in mind कि कौन सी कॉस्ट नहीं लेनी, कौन सी कॉस्ट नहीं लेनी. इफ देर इज एबनॉर्मल वेस्टेज, चलो ध्यान से सुनना. लेट्स से आई हैव अ 1 मीटर क्लॉथ. नॉर्मली इतना वेस्ट होता है इन मैन्युफैक्चरिंग 1 शर्ट. ठीक है. सो let's say the cost of manufacturing of buying this is 50 rupees. So I will include this cost in the t-shirt. Obviously बात है, हल्का सा जो नॉर्मल वेस्टेज हो रही है, आई एम गोइंग टू टेक फ्रॉम द कस्टमर ओनली.
but let's say in one day due to accidentally I do abnormal wastage, then the cost of this cloth, abnormal wastage, I'm not going to charge from customer. So abnormal wastage नहीं include होगी cost में, right? Similarly, if there is a storage cost, I manufactured whole my good, now that are put in godown, right? This is not a cost of inventory, this is not a cost of manufacturing inventory. मतलब I know I am going to charge from customer, कहीं ना कहीं अपने मेरे प्रॉफिट मार्जिन में जुड़ा होगा, but when I'm writing closing stock, when I'm calculating the cost of inventory, I'm not going to include this storage cost, right? Similarly, if there is administrative overheads like salary of accountants, if there is any selling cost like advertisement, I'm not going to include all of this cost in my cost of inventory. These are my other costs, right? These are my other costs. I hope that point is clear now. ठीक, हाँ जी. Till now we have covered what are to be included and what are to be excluded in when we are calculating the cost. देखो शुरू कहां से करी थी हमने कहानी शुरू करी थी यहां से, that to measure the inventory we have to check what is the cost and what is the NRV. Now if we are calculating the cost, then what points to be kept in mind? We have covered them. ठीक है, in cost you have to include three things: cost of purchase, cost of conversion, other cost. So cost of purchase में main goods हो गए, टैक्सेस हो गए, फ्राइट इनवर्ड हो गया, माइनस रेट डिस्काउंट. कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में डायरेक्ट लेबर आ गया, फिक्स्ड और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड हो गए, और अदर कॉस्ट में कस्टमाइज प्रोडक्ट वाले हो गए, राइट? तो ये सारी हमने इंक्लूड करनी है. देन इन बिटवीन वी अंडरस्टैंड दैट इफ देयर इज अ जॉइंट प्रोडक्ट, देन विच कॉस्ट इज टू बी इंक्लूडेड और विच इज टू बी एक्सक्लूडेड. ठीक है, इफ देयर इज अ बाय प्रोडक्ट, देन विच कॉस्ट टू बी इंक्लूडेड, विच इज टू बी एक्सक्लूडेड. ठीक है, ये हमने अभी तक कवर किया है. एंड सेमली कौन कौन सी कॉस्ट को हमें अपनी कॉस्ट नहीं मानना. चलिए आगे. कैन वी गो अहेड? यस, क्लियर? और इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. दिस इज बेसिकली एन एडवांटेज, आज जैसे बताता हूं, दिस इज बेसिकली एन एडवांटेज ऑफ लाइव क्लास. इफ यू आर इन द क्लास, मेक श्योर यू रिप्लाई. होगा क्या? लाइव क्लास अटेंड करने का पर्पस ही ये है दैट सर आई हैव डाउट इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, प्लीज क्लैरिफाई दिस. That's why we are taking regular live classes of SEBI daily. I want reply for every one of you right now. सोना नहीं है. You are not small kids जिनको मैं क्लास में हमेशा बोलता रहता हूं कि भाई बोलो 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 बोलो. और we are studying in too much depth. तो चांसेस आपको लगेगा कि हम जब एग्जाम देने आओगे ना, अगर एग्जाम में दोगे या प्रैक्टिस भी करोगे तो ठीक है सर हमने बहुत कवर कर रखा है. अभी तक सिर्फ हमने कॉस्ट पढ़ा, अभी एनआरवी को भी डिटेल में पढ़ेंगे. चलो बाकी स्टूडेंट्स भी फास्ट. इफ यू आर सिटिंग इन द क्लास, मेक श्योर यू आर रिप्लाइंग. मैं पकड़ पकड़ के भाई रिप्लाई करवाने वाला टीचर हूं. पहले मतलब क्लास में होते तो बुलवाता, फिर तुम्हें ही खड़ा कर देता जो नहीं बोलेगा. नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ अ सर्विस प्रोवाइडर. तो दिस पॉइंट इज आई थिंक रिमूव्ड नाउ, बट कहीं ना कहीं हम कवर कर लेते हैं. चलो, दिस पॉइंट इज रिमूव्ड फ्रॉम इंडियस टू, लेकिन हम कवर कर लेते हैं. तो इफ आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर, सो देयर माइट बी अ चांसेस मेरी भी कुछ इन्वेंट्री हो. लेट्स से आई हैव डिड सम वर्क, परसेंटेज ऑफ वर्क. सो उसकी मैं कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करूंगा? आई एम गोइंग टू ऐड द कॉस्ट ऑफ लेबर या कॉस्ट ऑफ सुपरवाइजर पर, जो भी मैंने कॉस्ट इंटर करी है. लेट्स से आई प्रिपेयर अकाउंट्स प्रिपेयर करने की मेरी एक फर्म है, जैसे हमारी वो है क्या कहते हैं, डिलॉइट के, पीएमजी वगैरह. सो दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स. सो हाउ दे हैव इन्वेंट्री? ऐसा तो नहीं होगा उनके पास अकाउंट्स के फिनिश गुड पड़े हैं खरीद लो, नो. तो उन्होंने क्या करा होगा? दे डिड सम पार्ट ऑफ देयर जॉब. लेट्स से दे हैव टू प्रिपेयर द अकाउंट्स ऑफ ए लिमिटेड एंड उन्होंने 70% अकाउंट्स बना दिए. That is basically their inventory. How they are going to record that? They will include the cost of the labor, the cost of accountants, the cost of CA they incurred in preparing that 70% of the accounts. ठीक, point समझ आया? We are not going to go in depth in this. Yeah, next आता है point हमारे पास
majorly techniques for measurement. First is standard cost method and second one is retail method. So standard cost is basically normal method. our normal क्या है, that how much cost I incurred. ठीक है. Retail method क्या है, let's say I am in trading of shoes. Trading means buying and selling shoes. Or I have one more method, retail method, that how I'm going to calculate my cost. So I can calculate the cost like, ठीक है, I can sell the shoes at rupees 500. ठीक है, out of this 500 my profit margin is let's say 10%, 50 rupees. So my cost is 450. This is basically retail method, generally applicable on retail businesses. How I am calculating my cost? Let's say my selling price of shoes is 500 rupees, my profit margin is 10%, so 50 rupees, so my cost is 450. Absolutely ना. This is basically another method. तो इनके डेप्थ में जाने की नीड है नहीं. If you are in manufacturing, then you have to calculate the cost of each particular thing, raw material, labor, supplier. That is standard cost method. ठीक. Next concept, cost formulas. Now there we have to cover two points, that how I'm going to calculate the cost. Let's say I am again take a same example. I am in manufacturing of shirts. Now if these shirts are not ordinarily interchangeable, what it means, मतलब जो हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, they are not same. They are not same. Let's say एक मैंने डायमंड की शर्ट बनाई, एक मैंने गोल्ड की शर्ट बनाई, एक मैंने सिल्वर की शर्ट बनाई, एक मैंने नॉर्मल शर्ट बनाई. They are not ordinarily interchangeable. Think from the perspective of, let's say, a furniture shop nearby your market. So cost of manufacturing one bed might be totally different from the cost of manufacturing other bed. So generally the businesses which deal in customized products, their products are not ordinarily interchangeable. ऐसा नहीं हो सकता I can give the diamond shirt to the buyer of gold shirt. The products are totally customized and not ordinarily interchangeable. In that case, I'm going to cover, let's say, the cost of diamond of the diamond shirt. The cost of diamond shirt is 5 lakh rupees. So I'm going to record this as a 5 lakh only. ठीक है, तो इंडिविजुअल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी. आई हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट. आई हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट कि डायमंड की 5 लाख, गोल्ड की 3 लाख, लेट्स से, एंड लेट्स से आई मेड अ स्टील शर्ट, तो स्टील की 3 लाख रुपीस. इफ द प्रोडक्ट्स आर ordinarily interchangeable. The products are ordinarily interchangeable. What ordinarily interchangeable means? I am manufacturing this shirt. I have manufactured this 100 shirts. अब मैं एक किसी को भी दूं, दूसरी किसी को भी दूं, doesn't matter, right? जैसा हमारा नॉर्मल बिजनेसेस में होता है. If कुरकुरे is manufacturing chips, तो जो कुरकुरे हैं, they are ordinarily interchangeable. कोई सा भी पैकेट किसी को भी दे दो, it doesn't matter. Similarly in shirts, jeans, that is ordinarily interchangeable. In that case, I have two methods to follow. Either I can follow FIFO or weighted average. Sir, what is FIFO and what is weighted average? Let me explain you with the help of one example, especially for non-commerce. Let's say I am, take a new example, rather than manufacturing, I am trading in shirts. I am trading in shirts. Okay? I am trading in shirts. So अच्छा मुझे बताना है, शर्ट होती है, टी शर्ट होती है, आई जनरली गेट कंफ्यूज्ड. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट शर्ट आई परचेज ऑफ 10 rupees. Then next day I purchase second shirt of 11 rupees, third shirt of 8 rupees, fourth shirt of 13 rupees, fifth shirt of 10 rupees. Now a question might arise in your mind that, sir, why the purchasing price of the shirt is changing every day? So there might be a possibility price is changing or not changing. I have taken the example if price is changing. तो प्राइस सेम भी रहे तो कोई फर्क नहीं रहने वाला, आप 10-10 लिख देना, फर्क नहीं रहने वाला. ठीक है, आई हैव टेकन द डिफिकल्ट एग्जांपल, so that कहीं कंसेप्ट रुके ना.
So I purchased first shirt at 10, second at rupees 11, third at rupees 8. ठीक है, fourth at rupees 13. Till now I have not sold. Till now I have not sold any shirt. Now after purchasing fourth shirt, there is a customer who to whom I sell two shirts. मुझे एक बात बताओ, what is the cost of selling these two shirts? Tell me. First purchase I bought at 10 rupees, second at 11, third at 8, fourth at 13. Then I sold two shirts. What is the cost of buying these two shirts? And sir, आप ऐसे बोलोगे these all shirts are same. हमने पहले बोल दिया ordinarily interchangeable. That means these all four shirts are same. Namita is saying 21. Why you are saying 21? So Namita is following FIFO. Namita is saying, sir, you are sell two shirts, na? I am going to follow FIFO. Sir, what FIFO is? First in, first out. जो शर्ट पहले आई, the shirt which comes first in the business is going to be sold first. That will go out of the business first. I will assume if I sold two shirts, then the first and second one. So that cost will come out to be, sir, 10 plus 11, 21. This is the one of the method which Namita followed. FIFO method, or might be all of you are following. 42 is not right answer, Shantanu. I am selling two shirts. So cost is 2. This 2. This is basically FIFO method. अच्छा, एक और मेथड होता है LIFO. एक और मेथड होता है LIFO. LIFO में क्या होता है? Last in, first out. So if I am following LIFO method, I am going to say my cost is 8 plus 13. My cost is 8 plus 13. That will comes out to be 21. अच्छा sorry, अच्छा ये by mistake 21 सेम आ रहा है. It can be different also. ये तो by हमारा वो हो गया, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल ऐसा हो गया कि 21 ही आ रहा है. It can be different also. So I am going to add the cost of last two goods. ठीक है, तो पहला मेथड फर्स्ट टू शर्ट्स का कॉस्ट ऐड कर दूंगा FIFO. सेकेंड मेथड LIFO, लास्ट टू का. वन मोर मेथड दैट इज वेटेड एवरेज. वेटेड एवरेज क्या होगा? आई एम गोइंग टू एड ऑल दीज कॉस्ट. दैट विल कम आउट टू बी 10, 20, 30, 38, 38 plus 3, 51. 51 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा कॉस्ट? जल्दी से डिवाइड करके बताओ, अच्छे बच्चे हो तुम मैथ्स में. That will come out to be 10.5, I think. 11, 10.5. 5 बन भाई, फिर 11 हुआ, 12.5 I think. जल्दी से डिवाइड करो. टोटल 42, नॉट 51. 10, 20, 30, 40, 41, 42. ओए होए, कैलकुलेशन एरर. कोई नहीं, आई एम ऑल्सो ह्यूमन. 42 डिवाइडेड बाय 4. तभी मैं कहूँ 10.5 क्यों लिखा हुआ है मैंने साइड में? 10.5. ठीक है, टोटल 42. मैं वो सोच रहा था 10.2 की, मेरे को लगा कैलकुलेशन एरर पहले हुई है. तो 42 डिवाइडेड बाय 4, 10.5. सो एवरेज, आई हैव कैलकुलेटेड द एवरेज. एवरेज इज ऑफ 10.5. एवरेज इज ऑफ 10.5. 10.5 into 2, that will also give me 21. अब ये तो किस्मत है कि सब 21 ही आ रहे हैं. But I hope the point is clear what I am doing here. So basically first method is adding only the cost of above two. Second is adding the last two, FIFO, LIFO. Average में I am calculating the average of particular shirt into 2. ठीक है, let me take one more example जहां पे आपके शायद वैल्यूज अलग आ जाएंगे. Let's say I purchased first good at 15 rupees. Second at let's say 13 rupees.
then third at let's say 12 rupees. ठीक है, अब 12 को छोड़ो 15 ही ले लेते हैं, let's say at 15 rupees. Let's say now I sold one shirt. Now I sold only one shirt. मुझे बताओ लिपो, अरे फिर सेम हो जाएगा, रुक जाओ भाई तुम बिना 18 कर लो इसे, 18 rupees. अगर I am following FIFO, what is going to be cost? If I am going follow LIFO, what is going to be cost? If I am following weighted average, what is going to be cost? 15, 13, 18. I bought first at 15, second at 13, third at 18. Now I sold one shirt. What is the cost if I am following FIFO, LIFO, weighted average? Only one shirt is sold. FIFO, sir, FIFO first one, 15. First in, first out. LIFO last one I am assuming selling, so 18. In this weighted average, so 15 plus 13 plus 18, 10, 20, 30, then 30, 41 plus 5, 46 divided by 3 करूंगा जो भी अमाउंट आएगी, आई थिंक 44. अगेन कैलकुलेशन एरर, लो भाई तो जो भी आंसर आएगा, आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर, यू कैन फॉलो. अच्छा लीफो पॉइंट फिर से सुन लेना, लीफो इज नॉट अलाउड, इधर यू कैन फॉलो फीफो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इधर यू कैन फॉलो फीफो और वेटेड एवरेज मेथड. लीफो इज नॉट अलाउड, इधर यू कैन फॉलो फीफो, इधर यू कैन फॉलो वेटेड एवरेज. अच्छा माय आंसर इज करेक्ट, either you can follow FIFO, either you can follow weighted average. I hope that point is clear. Here we have covered how to calculate the cost of the good. Can now move to NRV. Can we now move to NRV? I hope that all points, that what points to be included in cost, what not to be included in cost. If you are following different methods, then LIFO, FIFO, then how you have to calculate the cost. I hope that point is clear now. Absolutely correct, Mandeep. FIFO shares में होता है. So if you sell shares, the first share, the amount at which you bought the first share, जो सबसे पहले आया होता है, on that basis the capital gain is calculated. हाँ जी. Next is we have read that how to calculate the cost. Now we are going to study how to calculate NRV. अगर किसको पहले समझ नहीं आया होगा, now it is easily understandable. So NRV basically selling price in ordinary course of business minus estimated cost of completion, estimated cost of necessary to make sale. If I complete that product, then how much I am going to sell in the market, minus cost of conversion, minus cost of selling. ठीक, सिंपल सी बात. Now this is the case with a NRV of finished good, NRV of finished good. But in case if we are calculating the NRV of raw material, NRV of raw material, देखो पहले हमने बात करी of this shirt. Now I'm talking of raw material. I have purchased a cloth. थान कहते हैं, थान, full roll of cloth, थान. तो how I am going to, at what value I am going to record this? ठीक है, what is going to be the NRV of this? The question is this. So here they have tell two things, that if NRV of finished good, if NRV of finished good is greater than cost of finished good, देखो ध्यान से सुनना, अगर finished good का NRV हायर है कॉस्ट से, that means let's say NRV is 50 rupees and cost is 40 rupees. अच्छा tell me at what amount I am going to record this finished good?
at what amount I am going to record this finished good, this shirt, at 50 or 40? जल्दी से 40 नमिता, एब्सोल्युटली करेक्ट, आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दिस एट अ 40. ठीक है, अब इस केस में वो कह रहा है इफ यू कैन सेल योर फिनिश गुड एट रुपीज, if your finished good at मतलब if you can sell your goods higher, मतलब if your NRV is higher, if your NRV is higher of finished good, we are assuming कि जो आपका raw material होगा ना, NRV of that raw material will also be higher. So record this raw material at cost. Means here they are assuming if the NRV of finished good is higher, that's why you are recording at 40, na? Cost 40 lower. So if NRV of finished good is higher, we can easily assume that NRV of raw material will also be higher of cost of raw material. NRV of raw material will also be higher of cost of material. So do not calculate this NRV. चुपचाप calculate in cost. कुल चुपचाप वैल्यू दी इन्वेंट्री एट कॉस्ट. आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर. वो ऐसा सोच रहे हैं दैट भाई इफ द एनआरबी ऑफ फिनिश गुड, इफ यू कैन इजीली सेल द फिनिश गुड ऑफ एट हायर अमाउंट, क्योंकि सेल से तो बनता है एनआरबी, देन आई बी एज्यूम दैट रॉ मटेरियल कैन आल्सो बी सोल्ड इन इजीली. सो एनआरबी ऑफ रॉ मटेरियल विल आल्सो बी हायर देन इट्स कॉस्ट. ठीक है, सो डायरेक्टली calculate the NRV of raw material at cost. And similarly, if NRV of finished good is lower, तो आपको क्या करना है, अपना रॉ मटेरियल को भी वैल्यू करना है एट NRV. इफ यहां पे कम में आ रहा है तो यहां पे भी यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल एट NRV. ठीक है सर, इफ वैल्यू ऑफ NRV of raw material is not available, I can't predict that how much I can get by selling this raw material. Selling price से ये होता है ना. Then in that case you have to take replacement cost. What is replacement cost? Means that अगर same raw material मैं अपने पास लेके आऊंगा तो मुझे कितना खर्चा लगेगा. If this raw material I buy or I get from somewhere, how much amount I have to pay? That is basically replacement cost. ठीक, I hope that point is clear. ठीक है, अच्छा, right now you all said कि sir let's say NRV is 50 and cost is 40, then we are going to record at cost. ठीक है, let's say if NRV is 30, I know you all are going to say, sir, we are going to record the inventory at 30. I know you all are going to say this. अच्छा, what is the purpose? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. If we are expecting that my goods are be sold at lesser amount, तो ये लॉस अभी से रियलाइज कर लो ना. Why you are waiting to goods to be sold in the market? Concept of conservatism, prudence. If you are anticipating some losses, record it. Treat this as a loss right now. This 10 rupees loss. ठीक है, you have recorded in 2021, you have recorded your closing stock. You have recorded your closing stock at 30 rupees rather than 40 rupees. You are following lower of NRV and cost. ठीक है, अब 2021 आया, 2022 आया, 2022. Now it's again time to check your books of accounts. Now you have checked that ठीक है, NRV this time is 35 and cost is let's say 40 only. Means the goods which we have now, their value has increased in the market. Let's assume that. So will I keep this as a 30? No. Rule says lower of NRV या फिर cost. So in 2022, let's say the NRV is 35. I'm going to record
my closing stock, I'm going to record my closing stock at 35. So earlier मेरी कॉस्ट वो थी, तो ये वापसी आ जाएगा 5 रुपए का प्रॉफिट। तो ये क्लोजिंग स्टॉक जो पहले 30 का दिख रहा था ना, अब 35 का हो जाएगा। आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर। तो ऐसा नहीं है सिर्फ लॉस को ही झेलना है, अगर कुछ बढ़ भी रहा है तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, देखो हियर, इसको छोड़ते हैं, इधर देखो। लेट्स से आई मेड अ परचेजेस ऑफ 1000 रुपीज, दिस इज माय कॉस्ट, आई एम ट्रेडिंग, ठीक है। आई परचेज द गुड्स एट अ कॉस्ट, व्हेन आई एम वैल्यूइंग आई फाइंड आउट दैट माय एनआरवी is 800, my cost is 1000 rupees. So I'm going to record my closing stock at 800. This will give me a gross loss of 200 rupees. This will give me a gross loss of 200 rupees. In the same manner, अगर मुझे लगता है that my closing stock is higher, तो मैं कहीं ना कहीं वो ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करूंगा, ठीक है। लेट्स से मेरा क्लोजिंग स्टॉक 800 आया था, ऊपर से जब ट्रांसफर हुआ, ठीक है, आई हैव सीन, ठीक है, दिस टाइम एनआरवी इज 900 रुपीज, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द गुड तो 1000 ही थी, सो आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड एट एनआरवी, so this will give me a gross profit next year. तो वो 2021 था, ये 2022 है। बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसे ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हो जाएगा। Now at end, these all are the disclosures basically कि क्या क्या you have to mention in your books of accounts related to inventory, like amount of an inventory recognized as expense, amount to be written down of value inventory, कोई event, कोई भी चीजें, each and everything related to inventory you have to mention this. अच्छा, how we treat our expense? So here let's say if I purchased raw material of 100,000 rupees, या goods of 1000 rupees and sold at 1200, here 1200 minus 1000, 200, this will give me a profit. So this 1000 deducting purchase price means I'm treating this as an expense. I'm treating, by removing 1000 rupees na, I'm treating this as an expense. ठीक, I hope that point is also clear. So here we have covered our one accounting standard, that is basically Ind AS 2, and I think it's so much time that is sufficient for today's class. ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम ना हो जाए। I am damn sure if you go through the documents, I will going to upload this in the course. If you go through, you can easily understand each and everything. But make sure accounting standard is compared to other topics is bit difficult, specifically for non-commerce. Why I am saying that कि कहीं ना कहीं rules and regulations बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। Okay, if you are including cost, you have to include this. You have to keep these points in your mind. That if FIFO, LIFO है तो क्या है, weighted average है तो क्या है, cost of conversion में क्या क्या include होगा, क्या क्या नहीं होगा. If you are following Ind AS 2, which of the following are included in inventory, which are not included in inventory. So you have to revise the topics again and again. ठीक. If you have any doubt, you can ask now. Otherwise, we will continue in the next class. If you have any doubt related to today's topic, you can ask. Chalo. I will take previous year questions in one go, yaar. It will take time. I have to figure out. तो वो एक साथ जैसे ही AS complete होगा, I will take all the questions. ठीक है? जैसा अभी तक हम प्रोसेस फॉलो करते आ रहे हैं. Once the chapter is completed, we will take the questions. Last page where the entry is written. Why weighted? अच्छा हाँ, let me teach you weighted average. एक गोपाल जी का क्वेश्चन आया है, सर weighted average का मतलब क्या होता है?
I thought you understand what is the difference between what is the weighted average means. चलो गोपाल जी का क्वेश्चन ले लेते हैं. सर, यू हैव टेकन एवरेज रेदर देन वेटेड एवरेज. लिसन केयरफुली, लेट मी राइट हियर. ध्यान से देखो. I purchased one shirt at 10 rupees. I purchased one shirt. This is the first one. This is the second one. I purchased one shirt at rupees 12. I purchased third shirt, one shirt of rupees 15. तो मैंने आप सबको बोला add all these three into divided by 3. 3 शर्टें खरीदी है ना, तो 10 plus 12 plus 15 divided by 3. This will give me an average cost of a shirt. Sir, what is weighted average? What is weighted average? ध्यान से सुनना. Let's say if in the second purchases, if I in second purchases I bought 4 shirts rather than 1 shirt. In my third purchases, let's say I bought 2 shirts. तो सिंपल सा है भैया, होगा क्या? तो फर्स्ट की कॉस्ट आ गई 1 into 10 10, 4 into 12 48, 2 into 15 30 रुपीज. तो टोटल कॉस्ट क्या आ गई? 40 50 60 70 88. एंड हाउ मेनी शर्ट्स आई हैव परचेज्ड? 4 plus 1 5, 5 plus 2 6, 88 divided by 6. This is basically an average, simple average. This is basically weighted average. So I have taken simple average because I am buying only one shirt in my example. तो कहीं ना कहीं मैंने वेटेज निकाला. तो I hope that point also clear now, Gopal. ठीक है? This is basically weighted average. We have to cover only few standards which are mentioned in your syllabus. Namita, you asked me to take to the last page. What is your doubt? Do you have any doubt from here? अरे वेटेड एवरेज तो 10th क्लास में सीखते थे यार, क्या हो गया? चलो, I got it already. Thank you. Any other doubt? I know this topic is bit difficult as compared to all the topics which we have covered till yet, but I assume कि अगर if you go through notes again, when you revise, you can easily answer all the questions. हाँ जी. Now, students, let me know. Doubt, no doubt. If you have doubt, ask. Otherwise, we will wind up this session. Mention if you have doubt, please. All clear? Yeah, crystal clear. And this is the last chapter of accounting, I think. And we have covered all the chapters. Make sure साथ revision होनी चाहिए. Yes, you have to remember. Not all, again I am mentioning the AS and NDS which are mentioned in your syllabus. If you go through the syllabus, you will find out that there are the names of AS and NDS, accounting standards is mentioned. That's why I have taken directly NDS 2, not 1. Everyone in the class, if you are sitting in the class, make sure the doubt है तो ले लो ना यार, take advantage. You are in the live class. I am repeating again. The only 2 purposes of taking live class: consistency, doubt solving. ये दोनों चीजें रिकॉर्डेड में कम मिलती हैं हमें. You have to maintain a consistency with me. Today I am teaching you at 7 a.m. So you have to cover this particular topic today only. Then only you can crack the exam. You don't have a time. Make sure. हाँ जी. Yes, there is a bit difference. We are going to discuss them also, Nilesh. Somewhere maximum thing you will find out are same, but there are few difference. We are going to discuss them in the class.
ठीक है, लेट मी शो. तो last, in the last of this document we have AS2 also mentioned and the differences between them. We are going to cover that, not today. See here. जल्दी आ जाओ. AS10 properties. These are basically the difference between Ind AS and AS. This is basically whole comprehensive document. ये देखो, difference between Ind AS and AS. So we have provided you with the AS2 also. We are going to cover it, not today. चलो करें वाइंड अप क्लास. What is the principle of conversion? Conversion नहीं, conservatism. And Anji, everyone in the class who are attending my regular class, give the answer right now. Thank you, Namita. अक्षय के क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी स्टूडेंट्स. What is the principle of conservatism, not conversion? Anji. And give example also. One answer from Namita: anticipating possible future losses but not future gains. It is possible to prepare for anticipated losses. Somewhere right, realizing losses sooner than gains. Conservatism is anticipating future losses. Absolutely correct, all of you. That is basically anticipating future losses and recording them. Anticipating means if we are assuming that there might be a probability, there might be a possibility that we are going to incur some losses, then we are going to recognize them today only. For example, let's say Akshay, you have taken goods on credit from me. I am a shoe seller. I have sold a goods to you on credit of rupees 500. ठीक है? So now I am assuming that you are not going to pay me. You are not going to pay me. So here, this loss of 500 rupees, I know you have taken goods on credit. Listen carefully. I know you have taken goods on credit and you promise to pay after 3 months. You promise to pay after 3 months. ठीक है? You promise to pay after 3 months. But after a month, I know that ठीक है, you are not going to pay me. So after 1 month only, I'm going to recognize this as my loss and create a provision of doubtful debt. I will create a loss and create a provision of doubtful debt. ठीक, तो कहीं ना कहीं मैं 500 रुपए को एक्सपेंस ट्रीट कर लूंगा इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट आफ्टर 1 मंथ. यू हैव प्रॉमिस टू पे मी आफ्टर 3 मंथ्स. मैं आई विल नॉट वेट कि ठीक है जब आखिरी दिन आएगा आई एम गोइंग टू चेक. आई नो समवेयर दैट यू आर नॉट गोइंग टू पे. दैट इज एंटिसिपेटिंग समवेयर लॉसेस. ठीक है. सो इन रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, इफ एनआरवी इज लोअर, वी आर रिकॉर्डिंग एट एनआरवी. व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एंटिसिपेटिंग दैट यार जब ये सामान बिकेगा ना, then it will be of lesser value, right? And we don't have to anticipate the gains. भाई गवर्नमेंट कहती है how you are assuming, you are inflating your books. तो अगर if you are know that I'm going to sell let's say shoes after 3 months to someone else, you are not going to record that. So you have to anticipate losses only. I got that point clear. Any other doubt? चलो, make sure every one of you like the video because today's video is on YouTube. Make sure everyone like the video and subscribe the channel. जल्दी से भी से like करो, जल्दी. बाकी कल मिलेंगे मॉर्निंग एट 7 AM. ठीक है, चले अब. So that's all from my side. Bye bye. Take care. Have a nice day. See you tomorrow at 7 AM. Thank you, everyone.